कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बार बार एक किसी पर्टिकुलर नंबर को बार बार देख रहे हैं, कहीं भी आप जाते हैं आपको वो पर्टिकुलर नंबर दिखाई देते हैं। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ। 11-11 स्पेशली 11-11-11-11 जो होता है ना, 11-11-11 जैसे घड़ी में 11-11 होते हैं, तो डिजिटल वो नंबर काफ़ी लोगों को बार बार दिखाई देते हैं। ऐसे पर्टिकुलर कुछ कुछ नंबर दिखाई देते, तो काफ़ी लोग बोलते हैं एंजेलिक नंबर है, बट इस पे देते हैं पॉज। और हम अब वीडियो देखेंगे, सदगुरु एक्सप्लेन करते हैं कि इस नंबरों के पीछे क्या वजह है। तो आज का जो वीडियो है उसका नाम है सीइंग रिपीटिंग नंबर, इज इट मोर देन कोइंसिडेंट, एंड सदगुरु आंसर्स दैट। नमस्कारम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस चैनल में जिसका नाम है हम। आशा करता हूं कि आप लोग कुशल मंगल होंगे और हमारे तो नाम में ही मंगल है प्रभु। तो आज का वीडियो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, जो कि होने वाला है सीइंग रिपीटिंग नंबर्स, इज इट मोर देन कोइंसिडेंस एंड व्हाट। सो इसका जो है ना आंसर देंगे हमारे सदगुरु जी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज हिट द सब्सक्रिप्शन बटन और बेल आइकन को, घंटी को जरूर दबाएं। घंटी को दबा के ना जो नोटिफिकेशन का साइन आता है उसमें ऑल का वीडियो दबा दीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन को ऑल में सेट कर देना है, ठीक है ना। चलो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Let's say there are two people who love each other. If one person is thinking of a certain thought, the other person is also thinking of the same thought. Certain cohesiveness can easily happen with life. So, there is synchronicity with life, otherwise life would not exist. My question is this, in my friend circles, there are a lot of us experiencing what we've coined, synchronicities or God's winks, or because I know that there are I don't believe in coincidence, I believe in confirmation. But a lot of us are seeing like repeating numbers, 222, 1111, 333, 444, 1010, 1212, at many, it's not just me, it's like a whole community of people that I know are all like greatly aware of this secret, I guess, phenomenon amongst us. And it's beyond just the numbers, it's certain sightings and visits, or, it's just kind of magical. It's a magical time. But what would you say, what would you attribute this experience to? Because I know so many people that are having this experience right now. See, numbers and number systems have been invented by human beings, all right? We made up the numbers. Because we have 10 fingers, we made 10 an important number. And the zero came from India, you know that. The zero was invented in India and the number system evolved out of that. In India, we see that zero is the only true number because that always exists. Rest we made up. 1, 2, 3, 4 made up by us. Zero has always been there. It's the natural existence, there is a zero. There are many things which are zero. But 1, 2, 3, 4 we make it up. How far can we count? It depends, A child will think 10 means it's like a big number in a child's mind. Well, now you can say a million or a billion. Now these days everybody's saying a zillion. I don't think most people understand what's a zillion, but people keep using it. So about coincidence of numbers, one aspect, I'll just cover it in two different ways. One aspect is there are only 9 digits. So repetition is very obvious because there are, 7 billion people and there are only 9 digits. How many times will it repeat itself? Naturally, it will repeat itself many times. But at the same time, if there are two people close to each other, let's say there are two people who love each other. Now, it may so happen at a given moment, if one person is thinking of a certain thought, the other person is also thinking of the same thought. See, one person is picking a number which is 3, the other person is also picking number 3 because certain cohesiveness can easily happen with life.
not only with human beings, it can even happen with other creatures, it can happen with trees, it can happen with other animals. Among trees and animals also, this is very much there, much more than human beings. It is very little among human beings because there is too much of intellectual thought in the human being. In the other animals, there is not so much thought, so their synchronicity is way better than that of human beings, because they experience life chemically or by smell. So because of that, there is a much more cohesive synchronicity among other creatures. For example, if a group of wild elephants come and start grazing on a particular species of trees, within 20 minutes, all the other trees in that region belonging to that species, their leaf will go bitter and they'll turn mildly poisonous. Because they've communicated, we are being eaten up, you do something, they will all turn bitter. The elephants know about it. So because the elephants know about it, they will graze quickly in one place and then they will not even bother to graze the next tree and the next tree because they know they would have turned bitter, and they will go far away and again start eating. So, even among trees, there is such synchronicity. If human beings hit a pitch among themselves, good for them, but don't give too much significance to it, because then you will start imagining a whole lot of things which are unnecessary. But is there synchronicity with life? Of course. Otherwise, so many things wouldn't happen. There are lots of studies which clearly show this, and in the yogic system we call this samskriti. What samskriti means is, there is something called as, learning because of the atmosphere. You're not being actually taught anything. Just because a certain family has certain skills, even the children born in that family, just almost like they're born with those skills, they just adapt. It is just in the air somewhere, the skill. They just pick it up. They have made studies of various people and animals, mice. They have noticed that this is possible, that learning can just happen out of contact. So, there is synchronicity with life, otherwise life would not exist. But it should not be overdone in our minds, that's all. पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आया, पर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट ही मेंट टू से। जितने भी ये नंबर्स होते हैं ना, या जो भी चीज़ें हम अल्फ़ाबेट जगह जगह देखते हैं, कुछ वर्ड्स देखते हैं, हमें लगता है हमें वो वर्ड्स बार बार दिख रहे हैं, ये कोई साइन है, कुछ है, ये चीज़ है फ्रॉम गॉड और व्हाटएवर इट इज़, ये इट्स ऑल इन आवर माइंड, बिकॉज दीज ऑल थिंग्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अस। फॉर एग्जाम्पल, नंबर्स हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अस। तो हम क्या होते हैं, हम पर्टिकुलर टाइम उस नंबर पे फोकस इतना रख देते हैं कि हम फिर बार बार उस चीज़ को देखेंगे। दिखते हमें बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हमारा फोकस उस जगह रह जाता है। तो हमें लगता है कोई साइन है, देन हम गूगल करने लगेंगे, हम रिसर्च करेंगे, ये है इसका मतलब, एंड देन योर माइंड बिकम्स अ मेस, क्योंकि यू स्टार्ट बिलीविंग ऑन थिंग्स विच यू डोंट नो। किसी ने कुछ लिख दिया, किसी ने कुछ लिख दिया। सो यही सदगुरु ने कहा कि इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। लाइक यू शुड रादर बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड यू, रादर देन बिलीविंग इन समथिंग दैट ओ समबडी इज ट्राइंग टू गिव यू अ मैसेज और समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स इट, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़, मुझे पता है कि आपको पता है आपको क्या करना है। क्या आपको पता है आपको क्या करना है? जी हाँ, आपको शेयर करना है अपने दोस्तों, फैमिली, सबके साथ शेयर करो, या जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, ताकि लोगों को ज्ञान मिल सके, ज्ञान। चलो, बस यही था आज के वीडियो में। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, और इसी के साथ मैं लेता हूँ आप लोगों से विदा। सो माय फ्रेंड्स, यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, एंड टेक केयर ऑफ दिस प्लैनेट। नमस्कार।